Hi guys, welcome to KP classes. This video is particularly for the science stream students जो अपना करियर साइंस स्ट्रीम में ही परस्यू करना चाहते हैं, जो अपना ग्रेजुएशन साइंस स्ट्रीम में ही करना चाहते हैं। तो हम आज की वीडियो में समझने वाले हैं कि अगर आप साइंस स्ट्रीम में अपना ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आपके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसको आपको मीट करना है इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर द एडमिशंस इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो अब उसके लिए सबसे पहले अगर हम कई बार एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि भाई लैंग्वेज टेस्ट हो गया, डोमेन टेस्ट हो गया, जनरल टेस्ट हो गया। चलिए पहले हम उसके बारे में एक डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं कि आपका जो एलिजिबिलिटी है, आपका जो पैटर्न है, उसको हम एक ब्रीफ मैनर में समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम एलिजिबिलिटी वाले पार्ट में आएंगे। सो यू गाइज मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट दैट कि आपका जो CUET एग्जाम है वो आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें आपका जो सेक्शन 1 है दैट इज गोइंग टू बी योर लैंग्वेज टेस्ट। अब हम सेक्शन 1 ही इसको डिनोट करेंगे जो आपका लैंग्वेज का होता है। फिर उसके बाद जब हम सेक्शन 2 की बात करते हैं तो आपका जो सेक्शन 2 है दैट इज ऑफ डोमेन टेस्ट। और उसके बाद जो आपका थर्ड पार्ट है, जो पहले आपका जनरल टेस्ट था जिसको अब हमने जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कहना स्टार्ट कर दिया, वो आपका थर्ड पार्ट रहने वाला है। तो अब जनरली स्टूडेंट्स को क्या लगता है, भाई अगर हमें किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो हमें तीनों में अपीयर होना है, जबकि ये करेक्ट है। हो सकता है कुछ कॉलेजेस के लिए ये पैटर्न करेक्ट हो सकता है, लेकिन अगर आपने कोई पर्टिकुलर कोर्स डिसाइड कर रखा है कि मुझे यही करना है, तो देयर आर पैटर्न्स जो आपको समझने पड़ेंगे, देयर आर क्राइटेरिया जो आपको समझने पड़ेंगे। हो सकता है किसी कोर्स में आपको एक लैंग्वेज 3 डोमेन सब्जेक्ट के साथ एडमिशन मिलता हो सकता है कहीं पर आपको लैंग्वेज और जनरल टेस्ट के नाम पे एडमिशन मिलता हो सकता है कहीं पर आपको डोमेन टेस्ट और जनरल टेस्ट के नाम पे एडमिशन मिलता हो। तो इन चीज़ों को ध्यान से समझना हमारे लिए बहुत क्रूशियल और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आपका गोल क्या है, आप किस चीज़ के लिए पढ़ रहे हो, सो इट बिकम्स वेरी इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू रीलोकेट योरसेल्फ इन द एग्जाम। तो सबसे पहले तो आपका जो पहला स्टेप है, आप अपनी प्रायोरिटीज को देखें। अगर आपने कोई यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है तो उसको फॉलो करने का तरीका अलग है। अगर आपने कोई पर्टिकुलर कोर्स को टारगेट करना है तो उसको फॉलो करने का तरीका अलग है। सो इट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन योर प्रायोरिटीज। सो ये आपका CUET का बेसिक सिलेबस रहता है। अब हम बात करने वाले हैं, अगर आप साइंस कोर्सेज में अपने ग्रेजुएशन को करना चाहते हैं तो उस सिनेरियो में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, आपके पास क्या क्या कॉम्बिनेशन होते हैं जिनको आपको मीट करना है। अब जैसे आपका BSc ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी का कोर्स आपको दे रखा है, तो इसमें आपके जो सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, आपको कोई एक लैंग्वेज का आपको एग्जाम देना, एनी वन फ्रॉम लैंग्वेज, और इसमें आपके डोमेन सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ये आपको दे दिए गए। ये आपको देने ही देने हैं इन ऑर्डर टू टेक एडमिशन इन दिस कोर्स BSc ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी। इसमें आपको एडमिशन कर लेने के लिए आपको ये कोर्सेज और आपका जो सेक्शन 1 है और सेक्शन 2 है, इसमें आपको अपीयर होना है, इसको आपको सेलेक्ट करना है। अब अगर आपने ह्यूमैनिटीज कोर्स वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा वहाँ पे कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका पैटर्न नहीं है। वहाँ पे आपको दे दिया गया एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, मतलब वहाँ पे आपको सब्जेक्ट नहीं मेंशन किए गए। लेकिन साइंस कोर्सेज में आप देखोगे भाई आपको इनकी तैयारी भी करनी पड़ेगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड एनी वन फ्रॉम द लैंग्वेज। देन आफ्टर दैट अगर आप BSc बायोलॉजिकल साइंसेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एनी वन लैंग्वेज, BSc ऑनर्स बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एंड देन आफ्टर दैट anyone from the language. So you will find a similar pattern in all these courses. So once you select this pattern, you get eligible for multiple courses in Delhi University. Like you get eligible for anthropology, biological sciences, then BSc botany, and then BSc geology also. So you get eligible for all of them because the pattern is pretty much similar. Physics, chemistry, biology and any one language. Physics, chemistry and biology, any one language. Physics, chemistry and biology and any one language. Then after in this case, if I'm going to talk about physics, chemistry and biology and any one language. So this pattern is similar, but there is no discussion on the general test. That means if you want to pursue these courses, there is no requirement to read the general test, the third part. You don't need to go through the GK and current affairs. You don't need to read the maths and logical reasoning and English, all that. Right? English you can do in the language part, but not in the general test section, not in the general aptitude section. So moving ahead, these are the some other courses that are being given here. BSc biochemistry, BSc honors chemistry, BSc physics, BSc honors. For these courses also you'll find a similar pattern here. For this course, physics, chemistry and biology should be there. Anyone from the language part should be there. But there is one more thing that is being given here.
Physics, chemistry, you have to appear. Then after that, biology, biological studies, biotechnology, biochemistry, mathematics, applied mathematics, you can take any of the domain, right? You can take any of the domain with physics and chemistry. Physics, chemistry, biology can be a pattern. Physics, chemistry and biological studies can be a pattern. Physics, chemistry and mathematics can be a pattern. Physics, chemistry and applied mathematics can be a pattern, and one language subject has to be there. So this is about the eligibility of this course. Then after that, BSc honors chemistry, BSc honors physics and BSc honors. For these courses you will find a similar thing, physics, chemistry and maths or applied maths. Any one should be there at least. Then after that, anyone from the language. Then after BSc honors physics, BSc honors physics, chemistry and maths and applied math, and anyone from the language, physics, chemistry and math, applied math, anyone from the languages. So you will find that for the majority of the science courses at Delhi University, there is no requirement to read the third section, that is going to be your general aptitude section. You don't need to read all of that. Moving ahead, these courses are given: BSc Computer Science, BSc Electronics and BSc Instrumentation, BSc Environmental Sciences. For these courses you will also find a similar pattern, anyone from the section 1. One language is compulsorily there, right? If you are going for that means at least one clarity you got, that you have to fill, at least you have to appear in one language test. Then after that, physics, chemistry and biology or applied mathematics, depending on your area of interest, depending on the course you want to pursue. So इसके लिए अगर आप BSc ऑनर्स कंप्यूटर साइंस की बात करें, फिजिक्स आपको anyone from section 1, then maths and applied maths, then any two from section 2. What do you understand by that? You can select any two domain subject depending on your interest, but one domain subject has to be mathematics or it has to be applied mathematics. This goes same with the BSc honors electronics. Physics and chemistry is there, but with chemistry you can take either computer sciences or informatics practices, mathematics and applied mathematics, anyone from language. That means one language has to be there, physics should be there in this section. Either you take chemistry or you take computer sciences or you take information practices. Then after that, the third part is going to be your maths or applied math. That means for some courses you will find that math or applied math as a domain subject must be there in order to be eligible for these courses. Like if I am talking about these ones, like if I am talking about this course, like if I am talking about this course, here you will find that maths and applied maths is there, maths and applied maths is there, but physics and chemistry is there, right? But options for chemistry is also given for this course, this particular course. Then after that, BSc honors instrumentation, BSc environmental sciences, BSc food technology, right? So these options are given right here, and physics is there, chemistry okay, we have already done this, I guess. No, this pattern is similar, we haven't done this. Physics is there, chemistry you getting option of computer science, informatics practices, maths and applied math, anyone should be there at least as a domain subject. So here you are finding that physics is common, but with the chemistry you are getting these many options, and maths and applied math has to be there for being eligible for these courses. Physics and chemistry, maths and applied mathematics. Here one more thing is given, biology, environmental sciences, you are getting one more option of biology. Either you go with maths or biology, anyone is allowed, and any one language, three domain. For some particular subjects, some particular domains are there. Generally physics, chemistry and math, physics, chemistry and biology is a pattern that we are getting right here. And BSc honors food technology, physics, chemistry, maths and applied math has to be there. Then biology, biological sciences, biotechnology, these all are the options. So you are finding that at least three domain subjects are there. You are being given a chance, you are giving a option at your end that you decide for yourself, and any one language is there. Same goes with these courses. This PDF you can find on the Telegram group. We will provide this PDF on the Telegram group KP so you can go and access this PDF, and you can make a preference list for yourself. Then after that, BSc mathematics is there, BSc honors is there, BSc honors, these courses are there, and you will find a similar thing here. Section 1, maths and applied math has to be there in the domain subject, any two from section 2. Similarly in this case also, section 1, mathematics and applied mathematics has to be there, anyone from section 2. So in all these majority of the science courses, you are finding that there is no discussion on the general test. That means you don't need to appear in the general test part. Before that,
Before that, if I'm talking about the domain subject, 3 domain subject are there. In some cases you are finding that physics, chemistry and options with the chemistries are given. Sometimes you are finding physics, chemistry and mathematics, and applied mathematics as an option has to be there. So you need to be very diligent, right? So if you plan accordingly, if you set your preference list in a way so that you can get eligible for the majority of the courses, you have to set your preference list that way, right? If what I'm saying is, one language test you have to appear, one like this is particularly for the science stream courses, one subject that has you can select is going to be physics, the second you can select is chemistry or biochemistry depending on the priorities of yours. Then after that, third can be maths or applied maths, and there you go, right? There you get eligible for the many of the courses. If you have any particular question regarding your CUET journey, you can let us know in the comment box. We are all there to help you out with that. And for such more informative videos, you can follow us, you can like our videos, and you can subscribe to our channel for your CUET journey. Thank you so much, guys. KP Classes, dedicated to excellence.